question number 5 of the worksheet, which says, in the diagram, A is a point -1, 3 and B is a point 3, 1. The line L1 passes through A and is parallel to OB. So they're saying that this line L1 is parallel to the line OB. This line. If two lines are parallel to each other, what can we say about them? Miss, the gradients are the same. Exactly. So you can find the gradient of OB because O is simply 0, 0. Find the gradient of OB. Yes. It's 1/3. Yes, 1/3. y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay. So that is also going to be the gradient of AC or line L1. Okay. Now can you find equation of line L1 or line AC? Yes, miss, we can. Tell me how. You have its slope, and do you also have a point on line AC? The slope is 1/3. And you have a point on line L1. What is that, Ryan? Miss, -1, 3. Point A, which is -1, 3. Now tell me how you'll write the equation of this line. Miss, y is equal to mx plus c. When we know the gradient, we just put both of those points to find the c. Okay. But what if I don't want to use C? Which other formula can we use to find the equation of a line? Y minus y1 equals m x minus x1. That will also work. That is more recommended in this case because you have a point and you have a slope. So better to use the point slope formula, which does not require us to find C. Okay, so y minus 3 equals 1/3 and x minus -1, so that is going to be +1. I'm going to slightly rearrange it. So I'm going to send 3 to the other side. 3y minus 9 equals x plus 1 and 3y minus x equals 10. Yeah, okay. This is the equation of line L1. Yes, miss. Okay. The line L2 passes through B and is perpendicular to AB. Okay, now they're telling us that these two lines are perpendicular to each other. What can we conclude from this information? If these If they're perpendicular, that means the gradients are the negative reciprocal of each other. Okay, so can you give me the gradient of AB? Yes, miss. Miss, -1/3 उसका है तो मिस इसका -3 होगा. नहीं, 1/3 तो L1 का है. L1 और AB परपेंडिकुलर तो नहीं है. AB और L2 परपेंडिकुलर है. So directly AB का slope निकालो ना from its coordinates. You have the coordinates of A in the figure. You have the coordinates of B in the figure. Miss, -1/2. Yes, -1/2. Therefore, AB का 2 Slope of AB is -1/2. So slope of BC is equals to BC is perpendicular to AB. It's going to be 2, the negative reciprocal of that.
ठीक है. So now let's find equation of L2 or line BC. You have its slope, which is 2. Do you have a point from which BC is crossing? Do you have any point on line L2, Yes, miss. which is Point B. 3, comma 1? So now you can find equation of line L2 as well. Ryan, equation of L2 कैसे आएगी? इस हमारे पास L2 का ग्रेडियंट है और एक पॉइंट भी है. ग्रेडियंट भी है और पॉइंट भी है. Point. So पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम निकालेंगे. बताओ, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. जी मिस. Abu Bakr, did you try the homework questions? मिस मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था. अच्छा, कल से नहीं निकलेगा दिमाग से दोनों के. ठीक है, वरना मैं ये क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, मैं अगले क्वेश्चंस कराऊंगी. जो होमवर्क में आप करके लाओगे, खाली मैं वो डिस्कस करूंगी. आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस फ्रॉम स्क्रैच. यू गाइस नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लर्निंग, वरना नहीं मुश्किल हो जाएगा. बहुत स्लो सिलेबस जाएगा. प्लस इतनी क्वेश्चन टॉपिक भी नहीं इतना अच्छा समझ आएगा खाली मेरे साथ करने से. अच्छा जी, रायान आ गया. Y is equal to 2x minus 5. Y is equals to 2x minus 5. Let's see. You're saying y equals to 2x minus 5. Okay, so I'm going to use the point slope form. Y minus 1 equals 2x minus 3. So that is y equals 2x minus 6 plus 1 minus 5. Take it. So that is the equation of L2. So you have the equation of line L1, you have the equation of line L2, and you're being asked to find the coordinates of C. मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. Yes. Please solve these two equations simultaneously and tell me what you get. This one and this. मिस एक सवाल है. Hmm. मिस ये ग्रेडियंट ऑफ बी कहाँ से आया है? ओ बी, इसकी इक्वेशन दी हुई है कोई? हाँ, ओ बी में देखो, ओ होता है 0,0 और बी है 3,1. तो उसका आ जाएगा ना स्लोप. हाँ हाँ आपको जी, हाँ क्वेश्चन जी. में बताया है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल. तो अब L1 का स्लोप आया ओ बी के स्लोप से, बिकॉज दे आर टू पैरेलल लाइंस. इसलिए हमने ओ बी का स्लोप निकाला सबसे पहले, ताकि It's हमारे 5, पास 5 L1 का आंसर. सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं, 12,8 लिखा हुआ है इधर. क्वेश्चन 4 नहीं, अच्छा हम क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, सॉरी. 5,5, yes. Is that what you said? Yes miss. ठीक है, 5,5 is correct. So the coordinates of C are 5,5. Okay. Next it says find the angle ACB. You have to find this angle. Remember मिस the हम लोग formula जो मैंने लिखवाया था जिससे एंगल बिटवीन टू लाइंस आते. वैसे तो ये राइट एंगल भी है. You can use more than one method to find मिस हम theta. डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल डिस्टेंस निकाल सकते हो. ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, या ए सी का, या बी सी का, किसी दो का. और फिर क्या करेंगे आफ्टर दैट? पाइ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से एंगल तो नहीं आता. एंगल ओ आता है सोकैट नहीं वर्सेस तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा से. So ओ, you'll have to use either one of those, and depending on which one you're taking, आपने दो sides का ratio use करना होगा. ठीक है, so let's do it that way. AB की लेंथ बताओ क्या है? Give me the length of AB. Apply distance formula on AB. Square root 1 minus 3 whole square plus 3 plus 1 whole square.
What do we get? Miss square root 20, 2 square root 5. ठीक है, it's 2 square root of 5 directly from calculator. Okay. So AB is 2 square root of 5. Now let's find BC, length of BC. What is that? C came out to be 5, 5. So 5 minus 1 whole square plus 5 minus 3 whole square. What is the length of BC? Miss 5. 5 idea, that's not what I got. 5 minus 1 whole नहीं plus 5 minus 3 whole square. Ryan, you're not trying this. That's fine. कर रहे होते तो मुझे बता रहे होते साथ साथ. ये बिजनेस मिस इसका प्रपोजल 2 बाद आ में. रहे मिस 2 अंडर रूट 5. हाँ, same answer all. Yes, 2 under root 5. Same as AB. So this is also 2 under root 5. Okay, now which trigonometric identity are we going to use? अगर हमने AB और BC यूज करना है जी. Sin theta, cos It's theta, tan theta. adjacent over opposite tan. Tan, yes, tan. Tan theta through proper brushing, yeah, two opposite over adjacent. So 2 under root 5 over 2 under root 5, this is going to be 1. And tan inverse 1 is 45 degrees. So the angle is 45 degrees. All right. Yes. Another way of doing this question was from the formula I taught you, which is not in the syllabus, but if you know it, it doesn't cost you anything. Is the angle parabola? Minus m2 over 1 plus m1 m2. If you have the slopes of both the lines, जिसके बीच का angle find करना है, तो you can use this formula. Can you tell me the slope of line L1? इसका slope क्या है? What is the slope of line L1, the one I've highlighted in yellow? Miss 1 over 3. Yes, good. So let's say M1 is 1 over 3. And what about M2? What is the slope of this line? 2. मिस नेगेटिव नहीं, -2 कैसे है? 2 है ना? Y is equals to mx plus c की फॉर्म में. इसमें वो m of a भी देख रहा था. तो वो x दूसरी साइड पर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. So it's going to be 1 over 3. ठीक है. Now let's use the formula. Tan theta equals modulus. In the numerator, you subtract the two slopes. In the denominator, you write 1 plus product of the two slopes. So numerator mein it's 1 by 3 minus 2. And in the denominator, we have 1 plus 2 by 3. I've entered everything in the calculator. That's giving me -1. Tan theta equals modulus of -1. Modulus means make it positive. Tan theta is equals to 1. So theta is equals to 45 degrees. Any questions? There was another way of finding the angle.
in this particular question. ये हमने देख लिया कि it's an isosceles triangle, right? When you found the distance of B, AB and BC, both of them came out to be 2 under root 5. That means this is an isosceles triangle. So this angle was 90 and these two lengths were equal. So ये angles ये equal हो जाएंगे 180 minus 90 divided by 2, so 45. तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो फिर आपने जब देख लिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बस फिर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे 180 minus 90 divided by 245 direction. Okay, let's quickly do 4 as well. That was also part of the homework. Okay. अब I'm not going to give you guys any hints के पहले ये लेंथ निकाल लो ये स्लोप निकाल लो क्वेश्चन पढ़ते हैं and then you guys will tell me how we'll start the question. The diagram shows points A, B and C lying on the line 2y. हमने ये किया है कल किया था? We did first 4 questions yesterday. यस में हमने 5 और 6 करना है अब हमने Yes, yes, yes. ठीक है 6 था homework. ठीक है sorry. 4 तो हमने कर लिए थे first. Okay. So this question is, okay, the diagram shows a rectangle ABCD. Point A is 0, minus 2. Point C is 12, 14. The diagonal BD is parallel to the x-axis. So this line is parallel to the x-axis. These two lines are parallel. Okay. Explain why y coordinate of D is 6. Why is the y coordinate of this D is 6? You have to prove or show that it's 6. मिस हम ये शो कर सकते हैं कि मूवमेंट की वजह से कैसे? We'll have to be a more specific. कर सकते होंगे maybe. मिस क्योंकि जो ये ए और सी के दरमियान लाइन है ये इसका सेंटर पॉइंट है A और C के बीच में जो लाइन है वो. ये Okay. पैरेलल लाइन है ये हम्म क्योंकि सेंटर है ना हम्म तो ठीक इस कह रहे वजह हैं. से मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा हाँ इक्वल डिस्टेंस होगा तो 6 कैसे आएगा? हम्म, मिस अच्छा मुझे सोचना पड़ेगा मुझे बताओ कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? इधर value of y on this green line or value of y on A, the same thing. -2 है. मिस मिस नेगेटिव हाँ यस और यहाँ पे क्या है हाँ तो मिस वैल्यू? -2 से लेके यहाँ पे मिस क्या है वैल्यू? 14 हाँ 14 है. तो फिर इसके मिडिल में होना चाहिए -2 और 14. What is in the middle of -2 or 14? यस Or what is the midpoint of -2 and 14? -2 मिस plus 6 14 divided by 2. Yes, you have to show your working. 6. Okay, you're using the concept of average or mid value. Mid value of -2 and 14 find there. Okay. Express the gradients of AD and CD in terms of h. Okay, first they're saying that x coordinate of D is h. So this is h. Achha, another thing, if this is 6, D ka y 6 hai, that means B ka y bhi 6 hai, because they're at the same height. So this is going to be, let's say, x, 6. मिस Okay. इसको जो ये एज है मिस इसको मूवमेंट से निकाल लेंगे तो फिर एक्स भी एज की इक्वल होगा x और h तो इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि y की वैल्यू सेम है ना.
बी और डी की, हाँ एक्स की हाँ हाँ, वैल्यूज इनकी ठीक है। डिफरेंट है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड, इट्स telling you what you have to do. Express the gradient of AD and CD in terms of h. So what is the The gradient of age AD in terms of h? means y2 minus 5 over x2 minus Yes. x1. Can you substitute the values? Yes, miss. Miss h minus 0. Then y2 minus y1 goes in the numerator. हाँ 6, हाँ जी मिस, वो वही मिस वही की है। 6 plus 2 in the numerator and h minus 0 in the denominator. y2 minus y1 over x2 minus x1. So that's 8 over h. That is slope of AD in terms of h. And what is going to be the slope of CD in terms of h? मिस एक सेकंड। मिस आपने क्या कहे, सीडी का ग्रेडियंट? Hmm. मिस ये 6 - 14 6 minus 14 divided by, h - 12। take it. Okay. So that gives minus 8 over h minus 12, right? यस Okay. Now, what is the relationship between these two slopes? मिस दोनों पैरेलल हैं। Parallel कैसे हैं? ग्रीन मैंने जो लाइंस मार्क की है ना, ए ओ डी अच्छा और मिस सी वो डी। मिस परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर स्लोप्स में क्या कौन सी इक्वेशन यूज होती है? if two slopes are मिस perpendicular, तो m1 m2 की क्या इक्वेशन होती है? m1 m2 की क्या इक्वेशन होती है? It is m1 times m2 equals -1. वो जो हम नेगेटिव रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, वो यहाँ से आता है. So if ठीक है। two slopes are perpendicular to each other, the equation that connects the slopes is this: m1 times m2 equals to -1. So one of the slopes is 8 over h, and the other slope is -8 over h minus 12, and the product should be equals to -1. So we have -64 divided by 8 square minus 12h equals to -1. I'm going to divide -64 and -1 and bring 8 square minus 12h to this side. So we have 64. क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी ना? हाँ बिल्कुल, quadratic equation. 8 square minus 12h minus 64 equals to 0. Solve this quadratic equation by using either factorization or quadratic formula, and tell me what are the two values of h.
Are you using quadratic formula or factorization? मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला Okay, that's अच्छा, going to इसमें वही स्टेप करना है ना, कैलकुलेटर से सॉल्व करके देन एक कर इन्वर्स सकते हो, करके। वो भी कर सकते हो. If you directly use your calculator to get the answers, that would be 16 and minus 4. मीन्स मेरा भी यही है. ठीक है. And then What does that mean? फिर आपने ये हाँ इसको शो H करना है. minus 16 and H plus 4. Yes, age plus 4. You can go one step back to ensure that you don't lose marks for not showing steps. And if you're using quadratic formula, तो clearly show करना है. H equals minus b will be 12 plus minus square root 12 square minus 4ac over 2a. And then you can write the answer. Okay, so we have the two values of h. अब एक h जो है वो d की वैल्यू आई है x की, और जो दूसरा h है वो b की वैल्यू आई है x की. तो इनमें से d वाला h कौन सा है और b वाला h कौन सा है? मीन्स ये तो हम उससे मूवमेंट्स देख लेंगे. नहीं, आप फिगर से देखेंगे. फिगर में b और d की पोजीशंस देखो. तो अब मिस हाँ जी, ये बी होगा -4 राइट. So coordinates of और b are बी. -4, 6 and the coordinates of d are 16, 6. Okay, so we have the coordinates of b and d. Last part is calculate the area of rectangle ABCD. How can we do this? Area of rectangle ABC. You have all four vertices of the rectangle. You can use distance formula to find length and width and then multiply them. 16, 6 and -4, 6. So let's find the length AD and then find the length PA, and then we'll multiply length with width. So give me the length of AD. मिस ये लास्ट पार्ट है ना. जी. Okay, give me the two distances. मिस ये पहला वाला आ रहा है 8/5 ठीक है. What about the second one? और सेकंड वन इक्वल मिस 4/5. Okay. So length times width is going to be product of these two. So क्या है आंसर? मिस 160. ठीक है. 160 is the correct answer. Okay, let's now quickly move on to question 7. Okay. Given that AB is the line 2x minus 3y is equals to 5 and CD is the line x plus 4y equals to 1. Find the acute angle between the two lines. कैसे आता है angle between two lines?
Miss, angle between two lines. Just by Sorry? using the formula. Yes, what formula? Just one second. We know a formula that gives us angle between two lines, provided we have the slopes of the two lines, and we can figure out the slopes of both the ये lines. जो हम लोगों ने पहले की है वो M1 वाला हाँ, वही वाला. Tan theta equals modulus. M1 minus M2 over हाँ. 1 plus M1 modulus. Okay, give me M1. मिस ये होगा Is 2 over 3. Yes, 2 by 3 is correct. -3y दूसरी साइड पे जाके +3y हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा. And is So- negative 1 over 4. Yes. M2 is -1 over 4. Okay, now let's enter this in the formula modulus 2 by 3 minus bracket -1 by 4 upon 1 plus 2 by 3 times -1 by 4. Now please enter this all together in the calculator using multiple fraction keys and tell me what you're getting inside the modulus. मिस हम लोगों ने ये लाइंस भी डाली है कैलकुलेटर में नहीं, बस फ्रैक्शन सारी डालो. फ्रैक्शन की दबाओ, फिर न्यूमरेटर में फिर फ्रैक्शन की दबाओ. 2 by 3 सही है मिस प्लस दोबारा फ्रैक्शन की 1 by 4, फिर डिनोमिनेटर में जाओ, राइट 1 प्लस फ्रैक्शन 2 by 3 times bracket minus fraction 1 by 4. What do you get? Yes, what are we getting inside the modulus symbol? मिस 1.1 1.1 is correct. Positive ही आया है, and then tan theta is equals to 1.1 and theta is equals to what? मिस tan inverse 1.1, which gives, Is 47.73. right. But we're supposed to round off the angle correct to 1 decimal place. So 47.7 will be the answer. Okay. Next part is find the perpendicular distance from point G to the line AB. There's a point G. And there's a line AB. And you have to find this perpendicular distance. इसका भी हमने एक फॉर्मूला पहले दिन डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर. उसमें क्या करना होता है कि इस इक्वेशन को ax plus by plus c is equals to 0 के फॉर्म में लिखना होता है. So let's rearrange AB. How do I rearrange AB in this form? So you just bring 5 to the left hand side. Yes. It's 2x 2x minus 3y. 3y minus 5 is equals to 0. Now let's apply the formula. The distance formula was in the numerator, you write modulus ax1 plus by1 plus c, and in modulus close, and in the denominator you write square root a square plus b square. Okay, let's start with the denominator. What do we write in the This is denominator? a formula हाँ जी, इससे डायरेक्टली ये डिस्टेंस आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन, उससे डायरेक्टली आ जाता है. Okay. Minus So 2. A2 है, you're right. So 2 square plus B क्या है? Minus 3, negative 3. Negative This is 3. negative 3 Ignore the negative sign क्योंकि square ही कर रहे हैं.
तो डिनोमिनेटर आ गया नेगेटिव स्क्वायर 5। स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नहीं, -5 तो नहीं आएगा। नहीं नहीं, इसमें मुझे लगा आप ऊपर वाला कर दिए। अच्छा नहीं, ऊपर वाला नहीं कर। सो दिस डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 13। हाँ, अब न्यूमरेटर पे जाते हैं। व्हाट इज a टाइम्स x1? अब ये x1 y1 क्या चीज है? Miss G के coordinates. यस, सो a So इज 2 2। times 1 is 2. यस, प्लस Miss by1 negative is 3 is 18. 6। यस, plus c is Miss negative 5. yes. Okay, so what is this? 2 minus 18, 21 is 5 negative. minus 21, which you'll take as positive 21 because of the modulus sign. Distance is going to be 21 over square root of 13, which is 5.82. Yeah, correct answer. You should ideally write 5.82435206 first, and then you round it off to 3 significant figure 5.82. मुझे एक मिनट लिखने दें। Okay. Done. मिस बस ये बस हो गया। Okay. मिस हमने इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ, सारे करने होते हैं ना, ताकि टॉपिक प्रॉपर समझ आए। साथ होमवर्क करना होता है, सारे करेंगे। ओके, अच्छा, डन विद दिस वन। यस मिस। चलो, अच्छा मुझे बताओ कि ये फॉर्मूला, लाइक आई सेड, इज एन ऑप्शनल फॉर्मूला. Let's say you don't know this formula. How else can you find the length of this green line that you see on the screen right now? Diane, जरा unmute करो mic. मिस हम लोगों को ये जो ब्लैक लाइन है इसका फॉर्मूला पता है? ब्लैक लाइन की इक्वेशन पता है, फॉर्मूला क्या से आपका क्या वही मतलब? वही मेरा मतलब है, हाँ, इक्वेशन ये रही इक्वेशन। ना, ये रही, हाँ ये पता है, ये पता है, इसकी इक्वेशन पता है। मिस हम इसकी इक्वेशन से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? किसके कोऑर्डिनेट्स? इसके? आ, ये मिस ये जो लाइन है जी। इस पॉइंट के, ये जो यहाँ पॉइंट है इसका? जी मिस। नहीं ना, एक इसका x या y में से एक चीज पता हो तो फिर कर सकते हैं. You don't know any one of these coordinates, so no, you can't use the equation of the line to find these coordinates. Let's call it x. तो x के कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं आएंगे. मुझे बताओ, पिंक लाइन की स्लोप आ जाएगी? यस मिस। ठीक है, उससे क्या ग्रीन लाइन की स्लोप आ जाएगी? तो इसमें y-y1 लग जाएगा। हाँ, फिर आप ग्रीन लाइन y-y1 नहीं, आपको अगर पिंक लाइन की स्लोप पता है तो फिर ग्रीन लाइन की स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी. यस। ठीक है, आप मुझे बताओ, ग्रीन लाइन की इक्वेशन आ जाएगी? कैसे आएगी यस। ग्रीन लाइन की, कैसे आएगी? अच्छा अच्छा, मिस दोनों की इक्वेशंस को वो इक्वल पुट करके ही हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और फिर डिस्टेंस हाँ, का फॉर्मूला लग जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे करना है अगर ये फॉर्मूला नहीं आता.
और फॉर्मूला आता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला। ठीक है, इधर लेसन को एंड करते हैं। होमवर्क में मैं दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8, और करना है, कल करके यस, लाना है, ठीक है, ट्राई सिर्फ करके लाना। क्वेश्चन 8। हाँ 8 दे रही हूँ क्योंकि तुम लोगों ने कल वाला भी होमवर्क नहीं किया, इसलिए एक ही दे रही हूँ। वैसे मैं 2 देती हूँ, तो कर लोगे दोनों ट्राई? जी मिस पक्का, अभी एड ठीक है, नहीं लगाऊंगा। बस ठीक है। 8 और 9 ओ, होमवर्क है, और फिर कल इंशाल्लाह आगे से करेंगे। 10 से पहले होमवर्क प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और फिर आगे से करेंगे। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज रायान, तो मुझे लगता है सो गया। ओके, अल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, मिस अल्लाह। जी अल्लाह हाफिज।